तो अभी मैं यहाँ पर कुछ फैकल्टी मेंबर हैं हमारे पास केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। डॉक्टर शाहिद इकबाल, डॉक्टर मंजर सुहेल, बड़े जाने पहचाने, व्लॉग में आते रहते हैं। डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल, गर्मी है, अच्छा डॉक्टर आदिल मंसूर और डॉक्टर शुएब। तो मैं डॉक्टर मंजर से पूछना चाहूँगा कि जो ओपन हाउस है इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं, हमें कितने प्रोजेक्ट हैं और कैसा स्टूडेंट ने काम किया है, इस हवाले से। ओपन हाउस जो है ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का एनुअल इवेंट है। इसमें जो हमारे बीएस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं होल ईयर, और उसमें वो काफ़ी सारी जो अप्लाइड प्रॉब्लम्स आती हैं केमिकल इंडस्ट्री में या ओवरऑल रिसर्च में, उनको एड्रेस करते हैं और उस पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं। और ओपन हाउस वाले दिन वो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल जजेस आते हैं, वो उनके वर्क को असेस करते हैं, स्टूडेंट्स अपना काम प्रेजेंट करते हैं और इसमें से फिर जो भी बेस्ट प्रोजेक्ट जजेस अनाउंस करते हैं उनको ग्रेजुएशन डे पे गोल्ड मेडल मिलता है। इसका बेस्ट प्रोजेक्ट भी कंसीडर होता है? इसका बेस्ट प्रोजेक्ट जो है उसको गोल्ड मेडल मिलता है। ओपन हाउस का भी बेस्ट होता है? ओपन हाउस का ही बेस्ट प्रोजेक्ट है, उसी को गोल्ड मेडल मिलता है। कितने प्रोजेक्ट में हमारे पास ऑलमोस्ट 16 प्रोजेक्ट्स हैं, 18 प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो 3 स्टूडेंट्स मिलके 1 प्रोजेक्ट करते हैं और सम स्टूडेंट्स जो है वो इंडिविजुअल एक रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो काफ़ी सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल फिंगर प्रिंटिंग जो है, फोरेंसिक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, रीन्यूएबल एनर्जी पे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन पे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडार्स वगैरह में टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, मेडिसन पे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स गेट अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस टू ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जी, ये एफआईपी आज केमिस्ट्री का हो रहा है। सेकंड बैच पास आउट हो रहा है केमिस्ट्री का। लास्ट ईयर पहला हमारा एफआईपी प्रेजेंटेशन थी, इस दफ़ा जो है वो सेकंड एफआईपी प्रेजेंटेशन है। तो हमारे टोटल कोई अराउंड अबाउट 44 स्टूडेंट्स हैं जिनको डिफरेंट 18 ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो डिफरेंट जजेस को हमने इनवाइट किया है फ्राम डिफरेंट एरियाज़, जैसे डेस्टो से है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से है, ये SMME से, स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग से। तो वैरायटी ऑफ एक्सपोजर है जजेस का, हर एक एरिया के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। तो वो एवेलुएट करेंगे और जो बेस्ट पोस्टर डिक्लेयर करेंगे उसको प्राइज़ दिया जाएगा। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जो मेन फोकस है उनका जो आजकल के हार्ड टॉपिक्स हैं, जैसे एनर्जी है, बायोमेडिकल है, एनवायरनमेंट है, तो वो सबको फोकस कर रहे हैं। डाई डिग्रेडेशन पे, वाटर स्प्लिटिंग, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, बायोमेडिकल, हाइड्रोजेल्स, उनकी एप्लीकेशंस। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं। इस काम के अंदर हमने जो कोशिश की है केमिस्ट्री की फैकल्टी ने कि जो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs, उनके ऊपर भी फोकस किया जाए। तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैं वो SDGs के ऊपर फोकस। Assalamualaikum. I'm Sabah Sitar LV with my group mates Emma Mustafa and Aksa Bibi under the supervision of Dr. Manzur Suhail, and I'll be giving you an overview for our final year project with the title Simultaneous Water Purification and Energy Production via ZIF-8 Nanocomposites. Let's start off with the introduction. We used copper oxide, zinc oxide and ZIF-8 photocatalysts for the non-toxic as a non-toxic photocatalyst to remove organic dyes from water to showcase its potential for wastewater treatment. Also, it solved 2 daunting tasks. It also highlighted the catalyst's role in efficient water splitting, addressing the energy crisis with the production of oxygen and hydrogen, and it proposed promising applications in the fuel industry. Moving on to the objectives. Our main objective was to work with the facile synthesis of efficacious, cost-effective, environmental friendly, stable, and green catalytic materials for electrochemical water splitting. And for this method, we used ZIF-8 nanocomposites for the degradation of organic dyes. Moving on to our methodology. We use different concentrations of copper oxide, zinc oxide, and ZIF-8 in ethanol, and ultrasonication drying, our nanophotocatalyst was made. These were the concentrations that we used in our 5 photocatalysts. Photocatalyst 1 with ZIF-8 47%, zinc oxide 48%, and copper oxide 5%. Photocatalyst 2
with ZIF-8 30%, zinc oxide 65%, and copper oxide 5%. Now the photocatalyst 3, which gave us the best results with ZIF-8 40%, zinc oxide 55%, copper oxide 5%. Moving on to the photocatalyst 4, ZIF-8 was 20%, zinc oxide 70%, copper oxide 10%. And lastly, our last photocatalyst, photocatalyst 5, with ZIF-8 10%, zinc oxide 80%, and copper oxide 10%. Now moving on to our characterization. We perform several characterization techniques such as XRD and scanning electron microscopy SEM. Here we have showcased the XRD and with the peaks in the JCPDS literature. Here is the XRD of our photocatalyst with its structure. Moving on to the scanning electron microscopy SEM analysis. This is the SEM analysis of our photocatalyst 2, which gave us promising results, but the photocatalyst 3, which gave us better results, the SEM is mentioned here. Moving on to our photocatalytic testing. After 20 minutes time interval, our photocatalyst showed these peaks. And as it's evident from the graph, our photocatalyst 3, in which the ZIF oxide was 40%, zinc oxide was 55%, and copper oxide was 5%, it degraded to 98.96% in the first 20 minutes. Photocatalyst 2 degraded to 94% in the first 20 minutes. Photocatalyst 4 degraded to 93%, and our photocatalyst 5 to 89%. Its concentration was comparably low because we were using ZIF-8 in a smaller concentration. Moving on to our water splitting, these graphs shows the LSV curves, the linear sweep voltammetry curves for photocatalyst 2, 3, 4, and 5. And this is the electron impedance spectroscopy curve for the photocatalyst 2, 3, 4, and 5. From this, it is evident that the photocatalyst 3 with the highest charge density gave us the best results. And here, in electron impedance spectroscopy, the smallest resistance was shown by photocatalyst 3, which showed that it is a promising photocatalyst. Moving on to our electrochemical degradation. As you can see from the graphs, in the first 15 minutes, our photocatalyst 2 degraded to 96%. Moving on to our photocatalyst 3, which degraded to 98% in the first 15 minutes. Photocatalyst 4 degraded to 97%, and photocatalyst 5 to 89%. In conclusion, the successfully synthesized nanophotocatalyst of zinc oxide, copper oxide, ZIF-8 by hydrothermal method was found to be highly efficient for photocatalytic degradation. The best photocatalytic activity, as I have proved, was shown by photocatalyst 3. Photocatalyst 3 showed the overpotential value of 230 millivolts at the rate 10 milliamperes for water oxidation. The low cost and efficient zinc oxide, copper oxide, ZIF-8 photocatalyst fulfilled the requirement of low overpotential to split water. Moving on to our future prospects. The prepared nanophotocatalyst can be employed for efficient degradation of organic dyes, and in the treatment of wastewater, also you can produce fuels such as hydrogen. These catalytic materials can be employed and tested for photoelectrochemical performance. The similar catalyst can be employed for other energy generation applications. The references are mentioned here. We have showcased our samples here. This is our photocatalyst 2, photocatalyst 3, photocatalyst 4, photocatalyst 5. Photocatalyst 1 didn't show any results. This is our photocatalyst 2. This is our photocatalyst 3, which showed the best results. This is the photocatalyst 4. This is the photocatalyst 5. Here is our dye solution of methylene blue before degradation. And this is the solution of methylene blue after degradation. This was the lot from my side. Thank you so much. Good morning. My name is Fiza, and I, along with my group mates Tosif Ahmed and Hansla Iftikhar, are going to present our final year project that is based on synthesis and characterization of polysaccharide composite materials for food packaging. Our supervisor is basically Dr. Shahid Ali Khan, और हमारी जो group ID है that's FYP4. So basically,
I would be discussing a little bit about the background of our choice of topic. We have chosen this topic because you can see that our focus is to mitigate the environmental pollution and to produce the products that are very environmental friendly, very cost effective and time effective as well. आप लोगों ने देखा होगा कि like plastics होती हैं, they take along like hundreds of years to degrade. Even आप एक plastic bag ले लें, आप उसको dump कर देते हैं, it adds to environmental pollution. इवन एनवायरनमेंट की जितनी इकोसिस्टम है उसको ये इफेक्ट करता है, और उसके पास हमारे पास कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है. रादर देन प्लास्टिक को हम बर्न करते हैं, इट प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल गैसेस दैट पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट है, कार्सिनोजेनिक चीज़ें होती हैं, बहुत मसाइल होते हैं. सो आवर फोकस है कि हम जो है वो फ्रूट एक्सट्रैक्ट को यूज़ करें. फॉर एग्जाम्पल जो हमने एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है दैट इज़ बेस्ड ऑन द टमेटोज़ को हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसके अंदर से जो पॉलीफिनोल्स कंपाउंड्स होते हैं हमने उनको मिक्स किया विद स्टार्च एंड साइक्लोडेक्स्ट्रिन वगैरह के साथ. एंड व्हाई we chose these polymers because they were very cheap, they are cheaply available, they are cost effective, and the strategy we have used is basically the solution casting method. इसमें कोई chemical reaction involved नहीं हुआ, कोई acid, bases and any harmful thing जो कि हम कहें कि हमारे reactions, conditions या आने वाले product को affect करें, ऐसे इसमें कोई भी मसाइल नहीं थे. मिक्सिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स और ये फिजिकल इंटरेक्शन से एक हमारे कॉम्पोजिट बना है जो कि रूम टेम्परेचर पे बना है. आफ्टर दैट हमने इसकी वेरियस कॉम्पोजिशंस बनाई, क्योंकि हमने सॉल्वेंट फ्रैक्शनेशन की थी. हमने डिफरेंट सॉल्वेंट्स जो कि हमारे पास रेंजिंग फ्रॉम द नॉन पोलर टू द पोलर रेशोज़ जो हैं वो हमने अडॉप्ट की थी. हमने सॉल्वेंट जो हैं वो यूज़ किए, अपने टोमेटो एक्सट्रैक्ट के फ्रैक्शंस बनाए, उनको हमने फिर इन्हीं कॉम्पोजिट्स के साथ. उसके बाद हमारे पास एक चार्ट शो करता है द रेंजेस कि हमने कितनी अमाउंट्स ली थी अपने बेस पॉलीमर की, अलॉन्ग विद हमारे जो इसके अंदर मिक्स होने वाले एक्सट्रैक्ट्स थे. द बेसिक ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस दैट वी हैव डन. सो बेसिकली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आवर कॉम्पोजिट्स हमने ये फोकस किया था कि हमारा मेन focus is the antibacterial activity along with the biodegradation, right? So these graphs are particularly representing कि जो हमारी biodegradation हुई थी that was very effective in the terms के हमने जो है वो यूज़ किया था इसको sand dumping test, soil dumping test होता है. That's you basically आप 7 centimeters जो है depth of the soil होती है, आप उसके अंदर अपनी membranes को dump करते हैं, और after the 10 days, 15 days, 20 days tenure के बाद यू बेसिकली लुक फॉरवर्ड के ये आपकी क्या मेम्ब्रेन्स जो बनी है वो डिग्रेड भी हो रही हैं कि नहीं. एंड टू आवर लक यू कैन से कि हमारी जो मेम्ब्रेन्स थी आफ्टर 15 days यू कैन सी क्लियरली कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बिफोर पिक्चर, और उसके बाद वो प्रॉपरली जो है डिग्रेड हुई हैं, उनके मैस में, उनके कलर में, उनके साइजेस में काफ़ी चेंजेस आया है. दिस शोज एन एप्रिशिएबल लॉस ऑफ मैस एंड दिस रिप्रेजेंट्स कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्लास्टिक्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है. क्योंकि एक और चीज़, डंप होने के बाद देयर इज़ नॉट एन इशू, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, अगर ये सॉइल में डिग्रेड भी हो जाते हैं सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है. सो दिस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट अबाउट आवर प्रोजेक्ट. ऑल्सो द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी की अगर हम बात करें, वी टुक एन एंटीबायोटिक, उसके साथ हमने काफ़ी कंट्रोल लगा के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, एंड हमारी वो मेम्ब्रेन जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रूट एक्सट्रैक्ट मौजूद था ना, उसने जो है वो सबसे अच्छी एंटीबैक्टीरियल भी शो की है. सो दिस प्रूव्स कि हम जो है वो करोजन पर्पसेस से, बैक्टीरियल डिके से अपने प्रोडक्ट्स को बचा सकते हैं बाय पैकेजिंग देम. सो दिस इज़ द ओवरऑल aspect of our project, and we are also further working to absorb the heavy metals in the water. हमने उसके लिए भी preliminary tests perform किए हैं, but right now we cannot confirm because we have to work on that. So that's all from our side. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो माय नेम इज़ वजील हसन और मेरे सुपरवाइज़र का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान. सो बेसिकली द टाइटल ऑफ माय FYP इज़ द सिंथेसिस ऑफ शिप पेस्ट फॉर लेटेंट फिंगरप्रिंट डिटेक्शन. तो सबसे पहले हमने जो है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है जब भी हम कोई प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर रहे होते हैं. तो हमने सबसे पहले ये देखा कि जो फिंगरप्रिंट डिटेक्शन के लिए हमारे पास केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें नेन हाइड्रेट यूज़ होता है, वेरियस मेटल डेपोजिशन की टेक्निक्स यूज़ होती हैं, मेटल कम्प्लेक्सेस जो हैं वो यूज़ होते हैं. उनमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? द प्रॉब्लम्स दैट वी आइडेंटिफाइड वर कि एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, दूसरा उनकी मेथोडोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तीसरा वो बहुत लिमिटेड सरफेस पे डिटेक्शन करते हैं, एंड द फोर्थ वन वॉज कि उसमें मेटल्स की जो है वो यूजेज ज़्यादा है और जो कि एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट करती है. तो इसके सब्स्टिट्यूट में वी फाउंड आउट कि जो हमारे पास शिफ्ट बेस होती है बेसिकली उसकी फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो वाई डोंट वी यूज़ द फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट शिफ्ट बेस फॉर द लेटेंट फिंगरप्रिंट डिटेक्शन. तो द फर्स्ट पार्ट हमारा ये था कि हम शिफ्ट बेस को जो है सक्सेसफुली सिंथेसाइज करें.
तो पहले जो हमने क्या किया कि हमने एक रिएक्टेंट कॉमन रखा एंड सेकंड रिएक्टेंट विच वाज द अमाइन उसको हमने चेंज किया। तो फर्स्ट रिएक्टेंट वाज द 4 डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड, उसको हमने फर्स्टली रिएक्ट किया विद 2 मिथाइल एनिलीन के साथ और हमारे पास एक शिफ्ट बेस आई। देन द सेम रिएक्टेंट 4 डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड के साथ को हमने ट्रीट किया विद 3 क्लोरो एनिलीन और देन हमारे पास सेकंड शिफ्ट बेस आई। सो दीज वर द फर्स्ट टू शिफ्ट बेसिस दैट वर सिंथेसाइज्ड। देन अगेन हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या किया कि हमने अमाइन को कॉमन रखा एंड एल्डिहाइड को जो है वो चेंज किया। द अमाइन वाज 4 methoxy aniline। इन द फर्स्ट पार्ट हमने उसको सैलिसिल एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, we got this shift base, and then in the second part we उसको हमने cinnamon aldehyde के साथ रिएक्ट किया and we got the sp2 shift base. So the first part was to successfully synthesize the 4 different shift bases. इसकी मेथोडोलॉजी की तरफ अगर हम जाएं तो इट्स वेरी सिंपल। आपने दोनों को इक्विमोलर रेशियोज में लेना है, एथेनॉल में डिसॉल्व करना है, एसिटिक एसिड ऐड करना है एज अ कैटलिस्ट, देन उसको रिफ्लक्स करना है फॉर अबाउट 6 to 8 आवर्स और उसको मॉनिटर करना है बाय टीएलसी के साथ। टीएलसी इसमें यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट इंडिकेट्स कि हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। वंस इट्स बीन इंडिकेटेड बाय टीएलसी कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, फिर हम उसको सिंपली फिल्टर आउट करते हैं एंड द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोडक्ट को ड्राई किया और वाइल में स्टोर कर लिया। सो यहाँ तक हमने अपना जो फर्स्ट पार्ट था कि शिफ्ट बेस को सिंथेसिस है वो हमने सक्सेसफुली कर ली थी। द नेक्स्ट मेन पार्ट वाज कि आइदर वो जो शिफ्ट बेसेस हमने सिंथेसाइज किए हैं दैट कुड बी यूज्ड टू डेवलप द लेटेंट फिंगरप्रिंट्स और नॉट। तो उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। हमने चेक किया 9 डिफरेंट सर्फेसिस पे, कलर्ड पेपर है, प्लास्टिक है, वुड है, कार्डबोर्ड है, देन एल्यूमिनियम फॉयल है, थर्मल पेपर है, ग्लास है, लेदर है। हमने इन सब सर्फेसिस के ऊपर फिंगरप्रिंट्स लिए एंड देन वी अप्लाइड द पाउडर फॉर्मुलेशंस ऑफ द शिफ्ट बेसिस दैट वर बीइंग सिंथेसाइज्ड और उसने क्लियरली इंडिकेट किया कि जो फिंगरप्रिंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो जनरेट हो रहे हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगेन द मेथोडोलॉजी इज़ वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट, नो मेटल इज बीइंग यूज्ड तो एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट भी नहीं कर रहा। थर्ड पार्ट, 9 डिफरेंट सर्फेसिस के ऊपर आप सिमिलर शिफ्ट बेस यूज कर रहे हैं टू डिटेक्ट दी फिंगरप्रिंट्स। एंड द फोर्थ पार्ट वाज कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। So and the main thing also that we found out during our research was कि the shelf life of this shift base to detect the fingerprint was about of 2 days। कि अगर आपके fingerprints किसी surface पे हैं और वो 2 दिन पुराने भी हैं तो ये shift base उसको detect कर लेती है। So that was a very good interesting fact that we found out during our research। The next part is the characterization। अब ये क्यों ज़रूरी होती है कि because जो हमने कंपाउंड सिंथेसाइज किया उसको प्रूफ भी तो करना है कि वो कंपाउंड आइदर सिंथेसाइज हुआ है कि नहीं हुआ। So the main linkage जो शिफ्ट बेस में होता है that is this one, C double bond N linkage which is shown round about at 1600 per centimeter। तो आप ये देखें कि ये ग्राफ चारों जो है वो डिफरेंट हमारे पास शिफ्ट बेसिस के हमने नीचे ग्राफ शो किए हुए हैं। यहाँ पे भी हमारे पास C double bond N linkage इंडिकेट कर रहा है शिफ्ट बेस की। सेकंड पे आ जाए, यहाँ पे भी हमारे पास C double bond N linkage आ रहा है which is this one, तो ये भी शिफ्ट बेस की फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है। देन अगेन द थर्ड shift base was also indicated by the C double bond N linkage at about 1605 per centimeter, and then the fourth shift base was also indicated by the C double bond N linkage। So basically these were the characterization of the shift bases that we used। ये basically GCMS का analysis किया था हमने एक shift base का which also indicated the formation of our shift base 1। Then हम बात करते हैं उसके results and discussion पे। ये simple है कि atom economy, मेल्टिंग पॉइंट और यील्ड होती है। एटम इकोनॉमी बेसिकली हमें ये बताती है कि कितने % एटम जो रिएक्टेंट्स में हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। बिकॉज शिफ्ट बेस में हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और वाटर की एलिमिनेशन हो जाती है, दैट्स वाई एटम इकोनॉमी कैन नॉट बी 100% बिकॉज उसमें कुछ एटम्स लॉस उसका जो है वो लॉस हो रहा है। देन ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये फिजिकल पैरामीटर है, हर शिफ्ट बेस का अपना एक रिस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट होता है। एंड देन द यील्ड वाज कैलकुलेटेड through the reaction। So basically this was our FIP project in which we clearly found out कि शिफ्ट बेसिस जो हैं वो फिंगरप्रिंट डिटेक्शन के लिए यूज़ हो सकते हैं। थैंक यू। Assalamu alaikum. This is me, Malaika Afzal, along with my group members Momna Nisar and Atiya Roman. We synthesize the semiconducting ceramic materials for electrochemical applications under the supervision of Dr. Muhammad Ali Mansoor. So we synthesize basically the ceramic material through 2 techniques: aerosol assisted chemical vapor deposition (AACVD) and hydrothermal technique. We synthesize the electrodes of the combination 1:1 and then we further added porous copper in 1, 2, 3, 4%, which enhance their electrochemically application. We basically use techniques, and here are the methodology of these 2 techniques along with the decoration material that we synthesize. Here are some characterization of XRD analysis and experimental proofs from the lab, and applications that we studied through linear sweep voltammetry, electroimpedance spectroscopy, and electrosurface area through cyclophotometry.
And we concluded that our results are best for water splitting with 3% composite porous copper incorporated in the our composite, and that enhanced our plasmon effect. Thank you so much. तो यहाँ पर अभी अनाउंस हो चुका है, क्लोजिंग सेरेमनी हो चुकी है, अनाउंस हो चुका है कि कौन बेस्ट प्रोजेक्ट किसका बेस्ट प्रोजेक्ट था। तो अभी मैं आपको उन स्टूडेंट से मिलवाता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की है। बीएस केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ओपन हाउस में, उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। Assalamualaikum, I am Aksar Irshad, and I, along with my group fellows, are here to explain our project with the title Bioionic Liquid Modified Hydrogels and their Biomedical Applications. We worked under the supervision of Dr. Mudassir Iqbal. We basically focused on merging the properties of hydrogels and ionic liquids, which have not done yet. So our project novelty was basically to couple the bioionic liquids with biodegradable hydrogels. Basically divided our project into two parts. First was synthesis of modified hydrogels, and second was the incorporation of green synthesized nanoparticles into them. So, as we know that organic synthesis is incomplete without the characterization. So, we have performed different characterization techniques like IR analysis and then proton NMR analysis in order to determine the characterization of the different functional groups attached to our polymeric backbone. Then we have performed the thermogravimetric analysis in order to determine the thermal stability of the product at the different temperatures. Then we have also performed the mechanical testing to check the flexibility of our product as well. So, we also proceeded to the different applications in order to conclude our product. All right. So, as far as the applications are concerned, we tested their antibacterial activity and cytocompatibility. And the gels which we made, they were shown with immense antibacterial activity. The results were quite good. We also got their cytocompatibility and found that their percentage viability is greater than 70%. So that made our project and effort fruitful, and we got our project completed so within time. So. Oh yeah, so we got first position for our project competence, and that's all. Yeah, this one. All right, thank you. So about the project, we want to extend it further for 3D bioprinting and for wound healing and tissue engineering. Okay, so personal plans, I would like to do some research about chemistry domains, and then I will try to find out the master's option for that. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. First of all, I would like to thanks my supervisor, Dr. Mudassir Iqbal, and his cooperation in this project. And at the same time, I would like to thanks the whole faculty for this 4 years degree and the research project. Also, we have developed excellent research skills. I'm very thankful to this department for amazing work. And Alhamdulillah, we will continue this project for the 3D bioprinting. I'm really interested in it. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, sir.